Hello viewers, welcome to the another vlog in kitchen design and remodeling series. I am Richa and today I will discuss about the comprehensive guide about the kitchen countertops and which ones are the most popular choices that you can consider for your kitchen. A kitchen countertop is installed on the top of the lower cabinets in your modular kitchen. It is that one surface that you use for food preparation and cooking. अगर हम बात करते हैं the height and width of a kitchen countertop, the width is 2 feet while the height can be 2 feet 9 inches and higher. And according to the layout of your modular kitchen, it runs along one wall, two walls, three walls, and if you have island kitchen layout, then the island in the middle requires an additional countertop. The perfect countertop can be a game changer in the look of your kitchen. It is that one material that defines your kitchen and you want to define it right. Pretty obvious. However, the countertop is not just about the looks. There are multiple factors that you must consider before finalizing a countertop for your kitchen. So, those factors are is it heat resistant? Is it stain proof? Is it scratch resistant? Is it durable? Or is it in your budget? And is it gorgeous? In the market, there are numerous options available that can be baffling one for you. So here I am with the top picks of kitchen countertops that will surely help you choose the perfect one for your kitchen. So the very first is granite countertops. Granite countertops are the perfect options for busy kitchens. इसकी मल्टीपल कैरेक्टरिस्टिक्स की वजह से जो हमारी इंडियन किचन्स हैं उसमें ये गो टू ऑप्शन रहा है. ग्रेनाइट इज़ अ नेचुरल स्टोन जो कि मार्केट में मल्टीपल शेड्स में अवेलेबल है. तो आपके किचन इंटीरियर थीम के अकॉर्डिंग आपका डिज़ायर्ड शेड फाइंड करना भी कन्वीनियंट होता है. अगर हम बात करते हैं ड्यूरेबिलिटी की, देन द ग्रेनाइट लीड्स द पैक. इट इज़ हीट रेजिस्टेंट, जिसका मतलब है कि अगर आप कोई गर्म बर्तन अपने गैस स्टोव से उठाकर सरफेस पे रखते हैं तो यू कैन डू दैट. इट इज़ स्क्रैच रेजिस्टेंट, तो आप अपनी वेजिटेबल्स एंड फ्रूट्स सरफेस पे कट कर सकते हैं. इट इज़ ऑल्सो स्टेन प्रूफ एंड इसको क्लीन करना भी बहुत ईजी है. यू जस्ट नीड अ क्लीन क्लॉथ टू वाइप ओवर इट एंड यू आर डन. जो ग्रेनाइट काउंटर टॉप्स होते हैं वो जल्दी क्रैक नहीं करते हैं अनलेस आप उस पर कोई बहुत भारी चीज़ नहीं गिराते हैं. द नेक्स्ट वन इज क्वार्ट्ज काउंटर टॉप्स. क्वार्ट्ज एक कॉम्पोजिट, इंजीनियर्ड एंड मैन मेड मटीरियल है जो कि क्वार्ट्ज स्टोन चिप्स, पिगमेंट्स, एडिटिव्स इन बाइंडर्स से मैन्युफैक्चर किया जाता है. इट रिजेंबल्स लाइक अ नेचुरल स्टोन एंड मार्केट में ये मल्टीपल शेड्स में अवेलेबल है. इसके कॉम्पोजिशन के कारण दे आर कंसिडर्ड टू बी स्ट्रोंगर एंड मोर स्क्रैच रेजिस्टेंट टू द कंपैरिजन ऑफ ग्रेनाइट. इट इज़ अ नॉन पोरस मटीरियल, तो ये स्टेन प्रूफ भी होते हैं. इनको क्लीन करना भी बहुत इजी होता है. यू जस्ट नीड वार्म सोपी वाटर टू क्लीन द सरफेस ऑफ योर काउंटर टॉप. नेक्स्ट इज G5 या NanoWite. द NanoWite material is exclusively imported from China. If you want to give your kitchen a high-end luxury look or want to add elegance, then this is the perfect choice for you.
जो G5 मटेरियल होता है that has a shiny reflective layer and milky white color. This is long lasting and extremely durable. The G5 material is expensive to the comparison of other available countertop materials. It is a non-porous material and dense, so it is scratch free but not stain free. The next one is solid surface countertop. The best solid surface countertops is Korean from DuPont, जो कि मैन्युफैक्चर किए जाते हैं पॉलीमर रेजिन्स, मिनरल्स एंड कलरेंट्स से. इट इज़ स्ट्रॉन्ग, हाइजेनिक एंड नॉन टॉक्सिक मटीरियल. ये जो मटेरियल है ये नॉन पोरस होता है, तो ये स्टेन रेजिस्टेंट भी होते हैं. इट इज़ ऑल्सो हीट रेजिस्टेंट, बट आप इस सरफेस पे इलेक्ट्रिक तंदूर्स वगैरह यूज़ नहीं कर सकते हैं. जो कि सरफेस होती है कोरियन काउंटरटॉप की, ये मैट होती है, तो आप इस पे रिफ्लेक्टिव लेयर के लिए पॉलिश नहीं कर सकते हैं. ऑल्सो एक बेनिफिट इस कोरियन काउंटरटॉप का ये है कि दे आर रिपेयरेबल. तो अगर कोई स्क्रैच होता है ओवर द टाइम तो आप उसको रिपेयर भी कर सकते हैं. So these were the topics of kitchen countertop materials. जब भी आप किचन काउंटरटॉप मटेरियल फाइनलाइज करते हैं तो ऑल द एडवांटेजेस एंड डिसएडवांटेजेस शुड बी कंसीडर. अगर तब भी आपको कोई क्वेरी है तो सीक द प्रोफेशनल हेल्प. यू कैन कमेंट बिलो हेयर, और आप मुझे डायरेक्ट मैसेज भी कर सकते हैं ऑन माई इंस्टाग्राम अकाउंट दैट इज़ इंटीरियर्स बाय रिचा. लिंक डिस्क्रिप्शन में है.